Hello, hi everyone. Welcome back to our series of sessions for the UPSC personality test. We are going to start with the problems and solution wala method. The last में इतना time है ही नहीं, तो let's see. The first thing is Naxalism. Naxalism का जो issue है, तो context based मतलब in terms of the overall background and all, वो ठीक है, थोड़ा बहुत brief idea है, हमें देख लेते हैं यहाँ पे कितना है. Naxalism as a movement started in the year 1967. It started from Naxalbari in Pashchim Bengal. The main reasons of rise of Naxalism was, the first one was the Maoist ideology that was existing there. Second, the people who were living in these regions found the policies of the government as intrusive, as violation of their rights and land. This is important. This led to armed rebellion from them, and this is known as Naxalism. तो context wise इतना था. Now what are the problems that are related to Naxalism, or why Naxalism? What are the main concerns? क्यों हो रहा है ऐसा? तो जो concerns हमने निकालना है, पहला तो ये है कि पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट, and therefore what happens is that since Naxalism is spread to many states in India, different states in India, it is जैसे महाराष्ट्र हो गया, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया. तो क्या होता है, सिंस पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट, देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन टू इंश्योर कोऑर्डिनेशन इन बिटवीन दम. उसके अलावा इन टर्म्स ऑफ सोशल aspect we see that there is a kind of development disparity that exists. These regions are also backward and tribal in nature. They are also forest dominated regions. Next is the Forest Rights Act changes that we have seen. For example, the liberalization of the Forest Rights Acts so as to facilitate industries by land acquisition. This leads to displacement of people from their land. So in terms of policy, this has been one of the bone of contentions. Apart from that, in terms of government policies, there has been ineffective development as we see in terms of the lower socio-economic indicators that we have for these regions. And apart from this, even the government policies of, for example, road making, the access to road or access to internet, all this is not, this is limited in these regions. And there is also trust deficit that exists, that the government is not making policies for them, or even the existence of the government is not in favor of them, since they are not able to see the development that is happening across the nation. So this also creates like anti-government sentiments. Apart from that, the most important thing is the benefits of the development schemes are not reaching them in the way it should have reached. For example, let's say the implementation of third tier of governance, or making of roads, hospitals, educational institutions, internet, everything. It should also reach to them. So since it is not reaching, it seems that there is a development disparity, and even the benefits of these schemes they are not able to avail. So these were the main problems and solution सीखने से आएंगे और कहाँ से आएंगे. पहली चीज़ तो we have to ensure that there is a coordination that exists between police of different states. Second, even the paramilitary forces need to be empowered in those regions. For example, we had started Operation Samadhan of CRPF. इसके अलावा एक और चीज़ मुझे याद आ रही है कि there have to be adequate measures for rehabilitation for the people who wants to give up on Naxalism and wants to find an alternative source of revenue. तो इसके लिए सर्टन स्कीम है सरकार की कि कुछ पैसा दिया जाता है. पहला चीज़ तो पैसा दिया जाता है, उसके अलावा इवन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर गिवन टू देम. उसके बाद इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट दिस बेनिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स आर ऑल्सो बीइंग गिवन टू देम. दैट इज़ द गवर्नमेंट स्कीम्स आर एक्सेसिबल टू देम. तो एक्सेसिबल के लिए सबसे पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए. अवेयरनेस कहाँ से आएगी? आपकी एडवर्टाइज़ वगैरह इन सब चीज़ों से. वहाँ पे जाके मैसिव एडवर्टाइज़ करने की ज़रूरत है. उसके अलावा इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है.
इम्प्लीमेंटेशन में अब जैसे रोड कंस्ट्रक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज रोड एक्ट्स एज अ काइंड ऑफ लाइफ लाइन और नर्व ऑफ डेवलपमेंट। जहाँ जहाँ रोड बनेगा वहाँ वहाँ विकास आएगा, ये कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा थर्ड टायर को आपको इंस्टीट्यूट और कॉन्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत है, ग्राम सभा वगैरह इनको बनाने की ज़रूरत है। इनसे क्या होता है, कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होता है, एंड आपका जो डेमोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी गेट्स डीपन एट द ग्रास रूट। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये करने की ज़रूरत है। इलेक्शंस वगैरह यहाँ पे थर्ड टायर के टाइमली करने की ज़रूरत है, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा आपकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह है, पैरामिलिट्री फोर्सेस होगी और आपकी स्टेट पुलिस फोर्सेस होगी, इनको ना आपको एम्पावर करने की ज़रूरत है। एम्पावर आप किस तरीके से करोगे, एम्पावर आप एक तो इनको टेक्निकली करोगे, इन टर्म्स ऑफ मैन पावर करोगे, और ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग। ये कुछ चीज़ें हैं जिस तरीके से आप इनको एम्पावर करोगे। तो ये था हमारा नक्सलिज्म पे एक छोटा सा डिस्कशन, और मुझे लगता है कि हमने हॉलिस्टिकली नक्सलिज्म को कवर कर लिया है इन टर्म्स ऑफ इश्यूज़। अगर थोड़ा सा कंटेक्स्ट से बेसिक्स हमें देखना होगा तो हम एक बार देख लेंगे। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को, अब नेक्स्ट बनाएंगे, ऐसे टॉपिक वाइज ख़त्म करेंगे।